Hello students. Today I'll cover the poem Photograph from your book Hornbill. This is our poem number 1 by Shirley Tulson. The basic theme of this poem is that decay and death are an integral part of the human life, and with the time man loses his youth and strength, but one day also he is no more, and what is left behind are sweet memories and sore memories, which we all have through our photographs. So let's see the first stanza. The cardboard show me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she is a big girl, some 12 years or so. So here the word cardboard means the photograph. So in the photograph we have two female cousins which were paddling in the sea. Here we have two girl cousins, and paddling means walking with the bare feet in shallow water. जब बीच के पास जहाँ पे कम गहरा पानी होता है वहाँ पे जब उस चलने को पैडलिंग कहते हैं. ठीक है. So each one holding one of my mother's hand. So here is in the center there is a poet's mother, and this one and this one is the poetess mother's cousin. एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो ये जो मदर है उसकी एज बता रखी है डेट शी इज़ ऑफ 12 years ऑफ एज एंड शी वॉज द बिगर वन और द एल्डेस्ट वन ऑफ द थ्री. Okay, let's see the next stanza. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face my mother's that was before I was born. Okay, now let's focus on these three lines. All three stood still to smile means that all the three girls smiled through their hair at their uncle's camera for a photograph. And my mother was quite pleasant look at then, it was before my birth. Okay, तो वो अपनी मदर के बारे में कह रही है कि उनका काफ़ी स्वीट फेस था. And the sea which appears to be have changed and the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet. The word transient means lasting only for a short time or impermanent. Okay, now let's see the important lines. Last two lines, let's focus on the last two lines here. First, look at the photograph. That in the photograph we have sea also. That is because they went for paddling on the beach. So the poet here compares the sea with the human life. Poet said that the sea appears to be have changed less, that there is no changes in the sea at all, but the watch their terribly transient feet. Transient means impermanent or short-lived. So the poet explained here the sea which seems to have changed little since that time washed off their footprints terribly ट्रांजिट. तो यहाँ पे एक्चुअली एक कंपैरिजन कर रही है पोइट कि जो सी है उसमें इतनी चेंजेस नहीं आई हैं, लेकिन जो हमारा ट्रांजिट फीट है, जो ह्यूमन लाइफ है, उसमें वो जो है वो एक टाइम के साथ, एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के साथ वो ख़त्म हो जाता है. ओके, सो हियर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन अ सी एंड द ह्यूमन लाइफ. देन द थर्ड स्टैंजा. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. Through these lines, the poet cherished the memories which she spent with her mother. She said that after about 20 or 30 years, mother would laugh at the photograph and pointing to her cousins. ठीक है, उसकी मदर फोटोज देखती है और उसकी कज़न की तरफ पॉइंट करती है जो बैटी एंड डॉली है. would say that they were beautifully dressed when they were sent to the beach. ठीक है, तो जो ड्रेसिंग सेंस है वो फोटो देख के कह रही है कि कैसे हमें जो हमारे पेरेंट्स है वो ड्रेसअप करके बीच की तरफ भेजते थे. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. ओके, नाउ अगेन फोकस ऑन द लास्ट टू लाइन्स. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट मतलब जो जो बीच पे वो गई थी वो मदर के लिए पास्ट बन चुका है, और मदर का जो हंसना था फोटो को देख के वो पोएट का पास्ट बन चुका है. बोथ राय, राय मीन्स डिसअपॉइंटेड, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब क्या है
ये दो वर्ड हमारे पास आए हैं, लेबर एंड ईज, दोनों ही ऑपोजिट वर्ड्स हैं, कंट्रेरी वर्ड्स हैं। जहाँ लेबर है वहाँ पे ईज नहीं हो सकता, और जहाँ पे ईज है वहाँ पे लेबर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो पोएट क्या कह रही है यहाँ पे, बोथ राय, मतलब कि वो दोनों डिसअपॉइंट है। मदर, क्योंकि मदर का सी हॉलीडे ख़त्म हो गया है, उसका चाइल्डहुड चला गया है, और जो हमारी पोएट है उसके लिए उसकी मदर जा चुकी है। ठीक है, लेकिन दोनों ने अपना ये जो दुख है, ये जो लॉस है, इसको कवर अप किया है, और वो भी बहुत ईज से चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ा है उनको। ठीक है, टाइम के साथ बदलना पड़ा है दोनों को ही, इसलिए यहाँ पे पोइट वर्ड यूज़ कर रही है दैट सी हॉलीडे वॉज मदर्स पास्ट, हर लाफ्टर इज नाउ द पास्ट फॉर हर, एंड बोथ द मोमेंट्स आर नाउ परमानेंटली स्टेप्ड इन देयर माइंड विद अ फीलिंग ऑफ इटर्नल लॉस। ठीक है, दोनों की मेमोरीज जो है वो उनके माइंड में है, और उनको जो लॉस है वो इटर्नल लॉस है। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silences. Okay, now she is long, mother is no more now, and there is nothing much to be said about the sad event. So the silence seems to silence all thoughts. There is nothing to say at all, मतलब वो जो silence है उसने जो narrator है उसके thoughts को भी silence कर दिया है। ठीक है, it's a very simple poem. Then we have some alliteration, literary devices. In the literary devices, first we have alliteration. That is the alliteration means the close repetition of the same sound in a line. ठीक है, एक ही साउंड वर्ड जो है वो एक ही साउंड से शुरू हो रहे हों, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे स्टूड स्टिल स्माइल, सब में एस आ रहा है। ठीक है, देन थ्री थ्रू देयर, सब में द की साउंड है। ओके, देन देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट, रेपिटेशन ऑफ टी साउंड, its silence has repetition of s sound. Another poetic device we have, that is oxymoron. Here oxymoron, I told you earlier also that when we having the two contrary terms, that is the oxymoron. For example, loving hate, I burn and freeze. ठीक है, फोटोग्राफ पोएम में भी उसने वर्ड यूज किया ना, लेबर्ड इज, दैट इज अ oxymoron. Okay, so the questions which are asking from you people in your test is that is one word that's may reference to context, and also subjective also there, for 2 marks or 3 marks.